In the previous video, we have discussed till question 5. Now, question 6, part A. Given that x is greater than 0, find the two smallest values of x in radians. This is important. In radians, for which 3 tan into 2x plus 1 is equals to 1. And show all the necessary working. So 3 tan x into 2x plus 1 is equals to 1. Now put 2x plus 1 is equals to a. So that we get 3 tan a is equals to 1. Then tan a is equals to 1 by 3. After that, जब आपने inverse लेना होगा, so instead of a, you will put theta or alpha, but it should be different from a because we are considering the basic angle now. When we take the inverse, so we consider the basic angle, that's why. So theta is equal to tan inverse of 1 by 3 and tan inverse of 1 by 3 आपने रेडियन में कैलकुलेट करना है, ठीक है. So in radians, theta is equal to 0.3217. ओके इसके बाद आपने क्या करना होता है, क्वाड्रेंट बनाने होते हैं और उसके अंदर आपने थीटा जो है वो मार्क करना होता है, ठीक है. सो आपने क्वाड्रेंट ड्रॉ करना है, ठीक है. अब उसके बाद आपने देखना है इस स्टेप पे बैक. यहाँ पे आप देखें tan जो है वो आपके पास 1/3 यानी पॉजिटिव आ रहा है, और tan जो है वो पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में. सो दिस मीन आप फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे लाइन, ठीक है. एंड देन बेसिक एंगल मार्क करेंगे थीटा. बेसिक एंगल जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनता है. सो एक हमारे पास बेसिक एंगल ये थीटा आ जाएगा और दूसरा ये थीटा आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने जो ओरिजिनल एंगल्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है. सो ओरिजिनल एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट होगी. पहला एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, हम यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ तक. सो ये हमारे पास फर्स्ट एंगल हो गया एंड फर्स्ट एंगल इज सेम एज थीटा. सो पहला आंसर हम एज इट इज राइट कर देंगे 0.3217. फॉर द सेकेंड एंगल, देखिए सेकेंड एंगल के लिए जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेजरिंग टिल वी रीच एट दिस लाइन. सो अब इसमें देखें क्या हो रहा है कि पाई के अंदर जब हम थीटा ऐड करेंगे सो हमारा सेकेंड एंगल आएगा. सो पाई प्लस 0.3217, ठीक है. अभी थर्ड को नहीं देखेंगे, हम पहले फर्स्ट टू एंगल्स कंसीडर करेंगे. ओके सो अब ये हमने जो वर्किंग की है और ये हमारे जो एंगल्स निकले हैं वो ए के लिए निकले हैं, ठीक है, बिकॉज tan इज इक्वल टू 1/3 हमने कंसीडर किया था. अब हमने ए को पुट किया था 2x प्लस 1, देन बैक सब्सटीट्यूट कर दें 2x प्लस 1 एंड एंगल्स जो है वो आपने एज इट इज आगे लिख देने हैं, पाई इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है. सो नेक्स्ट इज 2x. तो इसमें आपने क्या करना है 0.3217 माइनस 1 एंड 3.46 डबल 3 माइनस 1, ठीक है. सो ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे. इन द नेक्स्ट स्टेप आपने 2 से दोनों को डिवाइड कर देना है. सो माइनस 0.3391 एंड 1.2316 आ जाएगा और ये आपके पास x के आंसर्स हैं, ठीक है. नाउ मूव बैक टू द क्वेश्चन. They are saying that x is greater than 0. So this means कि ये जो हमारे पास नेगेटिव आंसर आया है, this is not acceptable. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है. सो हमें एक और एंगल जो है वो कैलकुलेट करना होगा, ठीक है. सो ये वाला एंगल हमारे पास जो है वो चला जाएगा बाहर, मतलब इसको हमने निग्लेक्ट कर देना है. हमें एक और एंगल चाहिए, तो इसके लिए हमें एक जो है वो रेवोल्यूशन लेनी पड़ेगी. जैसे एक एंगल हमारे पास ये था थीटा, अगर हम इसी में ही 2 पाई का रेवोल्यूशन लेंगे दोबारा जब हम इस पे आ जाएंगे तो एक अनदर एंगल हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, like this. This is the third angle and you can see that this is 2 pi plus theta. So अब आपने थर्ड एंगल लिख देना है 0.3217 plus 2 pi and उसी तरह इसको सिंप्लीफाई करना है. So you will get 2.8024. So जो हमारे फाइनल आंसर्स होंगे वो ये होंगे. क्लियर?
So x is equal to 1.23 or x is equal to 2.80. Part B, the function f of x is equals to 3 cos square x minus 2 sin square x is defined for 0 is less than x less than equal to pi. Express f of x in the form a cos square x plus b, where a and b are constants. सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स इन्वॉल्व है, एंड जो उन्होंने हमसे डिमांड किया है वो क्या है, ओनली कॉस स्क्वायर एक्स है. दिस मीन्स कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो लगानी पड़ेगी. ठीक है, सो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, एंड फ्रॉम हियर साइन स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे. ठीक है, ताकि हमारी जो सारी जो इक्वेशन है वो कॉस स्क्वायर एक्स में बन जाए. So 3 cos square x minus 2 into 1 minus cos square x minus 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, and finally you will get 5 cos square x minus 2. Next step is to find the range of f. So जो f of x हमारा फंक्शन है उसकी हमने रेंज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, f of x को भी हमने रिप्रेजेंट किया है 5 cos square x minus 2 की फॉर्म में. ठीक हो गया, एंड वी नो दैट कि जो cos फंक्शन है उसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1. तो जो cos square x है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. 1 से ये एक्सीड नहीं कर सकता, एंड नेगेटिव भी इसका आंसर नहीं आएगा cos स्क्वायर एक्स का. ठीक है, सो cos स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. सो ओवरऑल ये जो फंक्शन है 5 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2, इसकी रेंज क्या बनेगी, 5 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 लगाए -2, बिकॉज ये 2 तो चेंज नहीं होने वाला. ठीक है, सो 5 - 2 3. इसका मतलब ये है कि जो आपका फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे सकेगा, 3 दे सकेगा. सो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3. तो ये इसकी जो है वो रेंज हो जाएगी. ठीक है, एंड इसकी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव भी आ सकती हैं, बिकॉज आप देखिए cos स्क्वायर एक्स जो है ना वो 0 पॉइंट समथिंग में भी वैल्यूज लेगा. ठीक है, तो जब वो 0 पॉइंट समथिंग में वैल्यूज लेगा देन 5 के साथ वो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, एंड देन -2, तो इट्स मीन कि इसका आंसर जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है. सो इसलिए हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि ओवरऑल फंक्शन का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 होगा. वी जस्ट नो कि जो cos स्क्वायर एक्स है उसका आंसर पॉजिटिव होगा, बट वी आर नॉट श्योर कि ओवरऑल जो फंक्शन है उसका आंसर पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, सो हम जस्ट इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे बात कर सकते हैं. सो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7 विच इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये अब इंक्लूड नहीं है. Question 8, Part A. Over a 21-day period, an athlete prepares for a marathon by increasing the distance she runs each day by 1.2 kilometers. So this means each day the distance is increasing by 1.2 kilometers. On the first day, she runs 13 kilometers. First part is find the distance she runs on the last day of the 21-day period. So this is the question from AP. And here n is equals to 21. 13 is the A, because on the first day she runs 13 kilometers. So A is equals to 13. And D is 1.2. So n is equal to 21, d is equal to 1.2, and a is equal to 13. Now write down the formula for finding the nth term of the arithmetic progression, because they have demanded the distance she runs on the last day of the 21-day period. So n is equals to a plus n minus 1 into d. Substitute the values and you will get the answer, 37 kilometers. Second part is find the total distance she runs in a 21-day period. So the sum formula, that is Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This formula is for arithmetic progression. So substitute the values in the formula because all the values are given.
So you get S21 is equals to 525 kilometers. Next is the B part. The first, second, and third terms of a geometric progression are x, x minus 3, and x minus 5, respectively. Find the value of x. So, this is the question for a geometric progression. And for geometric progression, we know that there is a common ratio, which is r is equals to next term divided by the previous term. And we have the three terms of a geometric progression. So इट्स मीन अगर हम फर्स्ट टू टर्म्स में से आर फाइंड आउट करें या सेकंड एंड थर्ड टर्म में से आर फाइंड आउट करें, तो वो दोनों जो है वो इक्वल होंगे, बिकॉज जो कॉमन रेशियो है जो आर है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम ही रहता है. ठीक है, सो ये चीज हम यूटिलाइज करेंगे. x minus 3 over x, this is equals to x minus 5 over x minus 3, and then cross multiply and simplify, so you will get the final answer x is equals to 9. Next part is find the fourth term of the progression. So to find out the exact term, you need to find out the value of r. Now x is equals to 9 we have found in the previous part. So we are going to use that to find the value of r. R is equals to x minus 3 over x. Put the value of x, then the r will be 2 by 3. Now put the formula, write down the formula for finding the fourth term of GP, which is A4 is equals to A into R raised to the power 4 minus 1. Substitute the values and you will get the final answer 8 by 3. Next step is find the sum to infinity of the progression. So S infinity is equals to A over 1 minus R. Again, just substitute the values and the final answer will be 27. Next is question 9. The functions f and g are defined by f of x is equals to 2x squared plus 8x plus 1 for x belongs to R, and g of x is equals to 2x minus k for x belongs to R, where k is a constant. First part is find the value of k for which the line y is equal to g of x is tangent to the curve y is equals to f of x. Okay, so f of x हमारे पास एक quadratic function है and g of x एक linear function है, and we have to find the value of k for which g of x is tangent to f of x. So दोनों को हम y के equal लिख लेंगे, y is equal to 2x minus k. And second one also y is equal to 2x square plus 8x plus 1. Then दोनों को हम equate कर देंगे. ठीक है, so 2x square plus 8x plus 1, this is equals to 2x minus 4. Then take this 2x and minus k to the other side and bring in the standard form of the quadratic equation. So this becomes 2x squared plus 6x plus 1 plus k is equals to 0. And here you have to figure out a, b, and c. Here a is 2, b is 6, and c is 1 plus k. Now put the condition for the tangent, which is b square minus 4ac is equals to 0, and then put the values of a, b, and c, and simplify, you will get k is equals to 7 by 2. Next, second part, in the case where k is equal to minus 9, find the set of values of x for which f of x is less than g of x. So simply just put f of x less than g of x and simplify. F of x was 2x squared plus 8x plus 1, then put less than, and g of x was 2x minus k. Now put the value of k, which is given for this part, k is equals to minus 9.
Okay, so then simplify. This becomes 2x squared plus 6x minus 8 is less than 0. Take 2 outside as a common, then x squared plus 3x minus 4 is less than 0. And now this is a quadratic inequality. So now we are going to use the middle term breaking. So for which we have selected the two factors plus 4x and minus x, because we want कि जब हम multiply करें दोनों को तो आंसर आना चाहिए minus 4x square, and if we add and subtract तो आंसर हमारा आना चाहिए plus 3x. Okay, in the next step, take x as common from the first two terms. So this becomes x into x plus 4. And from the next two terms, take minus 1 as common. So this becomes x plus 4 and less than 0. Next is x plus 4 into x minus 1 is less than 0. Okay, now what we have to do, we have to draw the graph of this curve, x squared plus 3x minus 4. So now draw the graph, put x plus 4 is equals to 0, and this gives you x is equals to minus 4. And from here, if you put x minus 1 is equals to 0, you can see x is equals to 1. So after drawing the x and y axis, plot these values on x-axis minus 4 and 1. Now decide the shape of the curve. In the case of quadratic, we know that if the coefficient of x square is positive, the shape of the curve is a smiley face. And if the coefficient of x square is negative, the shape of the curve is a sad face. Now in this case, we have x square coefficient is 1, which is positive. So the graph will be a happy face passing through the minus 4 and 1. So we have drawn this graph. Next step is to shade the area. We know that if the inequality is showing less than 0, then we will shade the area below the x-axis. And if the inequality is showing greater than 0, then we will shade the area above the x-axis. In this case, we have less than 0, so we have shaded the area which is below the x-axis. And for this shaded region, we will write down the inequality. So minus 4 is less than x is less than 1. So this is the set of values. So set of values basically means that you have to find the interval. And this is the range of values, or this is the interval for which f of x is less than g of x. Moving on to next part. In the case where k is equal to minus 1, find g inverse of f of x and solve the equation g inverse of f of x is equals to 0. Now we have to take k is equals to minus 1, and we will find g inverse, then the composition of function g inverse of f of x, then we will solve the equation g inverse of f of x is equals to 0. So if we put k is equal to minus 1 in g of x will become 2x plus 1. Now we have to find the inverse. For finding the inverse, first step is put y is equals to 2x plus 1. Second step is swap x and y. So replace y with x and x with y. So this becomes x is equals to 2y plus 1. Next step is to make y as a subject. So this is y is equal to x minus 1 over 2, and this is the final inverse for the g of x. So g inverse of x is equals to x minus 1 over 2. Next, we will find composition of g inverse and f. So g inverse of f of x means g inverse of, now replace f of x with 2x squared plus 8x plus 1, because f of x was 2x squared plus 8x plus 1. So आप f of x की जगह पे simply लिखते हैं 2x squared plus 8x plus 1. ठीक है. Now g inverse of x जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है, उसमें आपने क्या करना है, x की जगह पे जो भी अब इनसाइड द ब्रैकेट आ रहा है इसको आपने रिप्लेस कर देना है. ठीक है. So this becomes 2x squared plus 8x plus 1 minus 1 over 2. And after simplifying,
we get 2x square plus 8x over 2, and further simplification gives x square plus 4x. Now we have to put this equals to 0 and solve. So x square plus 4x is equals to 0. Take x as common. X into x plus 4 is equals to 0. And from here we get x is equal to 0 and x is equal to minus 4. Next part, express f of x in the form 2 into x plus a whole square plus b, where a and b are constants, and hence state the least value of f of x. So write f of x is equals to 2x square plus 8x plus 1. Then take 2 as common, because in the question we can see that there is 2 outside the bracket. So take 2 as a common into x square plus 4x plus 1 by 2. Next step is to apply the completing square method. And for that, what we have to do, divide the coefficient of x by 2. Coefficient of x is 4 divided by 2, and we get 2. So now we are going to add 2 square and subtract 2 square. So plus 2 square and minus 2 square. Now जो first 3 terms होंगी वो क्लब हो जाएंगी फॉर्मूले में, and this will become x plus 2 whole square, because ये आपके पास फॉर्मूला बनता है a square plus 2ab plus b square, and इसको हम क्लोज करके लिखते हैं a plus b whole square. So जो फर्स्ट 3 टर्म्स होती हैं, ये फर्स्ट 3 टर्म्स ये आपकी क्लब हो गई इस फॉर्मूले में x plus 2 whole square. And then next minus 4 and plus 1 by 2 as it is. Upon simplifying we get 2 into x plus 2 whole square minus 7 by 2. Then ये जो 2 है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सेपरेटली दोनों के साथ. So 2 into x plus 2 whole square minus 7. Next step is to identify the least value of f of x. For identifying the least value, remember, if you have a into x plus b whole square plus c, this is the form of the function, then the least value will be this. This c will be the least value. So here in this case, we have the least value of f of x as minus 7. Next is question 10. The diagram shows the part of the curve y is equal to 1 minus 4 over 2x plus 1 whole square. The curve intersects the x-axis at A. The normal to the curve at A intersect the y-axis at B. First part is obtain the expressions for dy by dx and integral of y dx. So this means कि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है और इंटीग्रेशन भी फाइंड आउट करनी है. So कर्व आपको गिवन है y is equal to 1 minus 4 into 2x plus 1 raised to the power minus 2. So इसका डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. सो dy by dx is equals to जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. देन दिस 4 is as it is, एंड नेक्स्ट वाले पे हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे. सो पावर को नीचे उतार दें, पावर में से एक कम कर दें, एंड देन इनसाइड डिफरेंशिएशन. So minus 4 into minus 2, 2x plus 1 raised to the power minus 2 minus 1, and then inside differentiation. अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2x plus 1 है, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 into 1 plus 0 which is equals to 2. So finally we have dy by dx is equals to 16 into 2x plus 1 raised to the power minus 3. Okay, next step, next we have to integrate y. So now apply the integration. Integral of 1 dx minus 4 outside the integral because this is constant, and integral of 2x plus 1 raised to the power minus 2 dx. And 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, तो हमने राइट डाउन कर लिया एज इट इज, minus 4 as it is,
एंड देन नेक्स्ट इसके लिए क्या होगा, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। If the integral is in this form, that is ax plus b raised to the power n, then इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, 1/a into ax plus b raised to the power n plus 1 over n plus 1 plus c. So here in this case we have a is equals to 2 and n is minus 2. So this becomes minus 4 multiplied by 1 by 2 means 1 by a, and then 2x plus 1 raised to the power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 and plus c जो है वो constant of integration involve हो जाएगा, ठीक है। And next step is to just simplify these, so we get the final answer x minus 2 into 2x plus 1 raised to the power minus 1 over minus 1 plus c, and finally x plus 2 into 2x plus 1 raised to the power minus 1 plus c. Second part is find the coordinates of B, and let's go back to the statement and see what is the B. If you look at the diagram, so this is the curve and this AB is normal to the curve and B is the point on the y-axis and the normal line as well. So this means अगर हमें point B find out करना है, so उसके लिए हमें क्या find करना होगा, हमें equation of this line find करनी होगी, and this line is normal line. So हमें in order to find out B, we have to find out the equation of normal line, and उस normal line में जब हम x is equal to 0 put करेंगे, so हमें जो है वो B पता चल जाएगा, ठीक है। So अब हम start करेंगे equation of normal line find करने से, and to find the equation of normal line we will be needing the value of m and a point, ठीक है। point जो है आप देखें ये a point पड़ा हुआ है इसी पे, so point तो हम यूज कर लेंगे a, m हमारे पास कहाँ से आएगा, हम dy पर dx ले लेंगे इस कर्व का, ठीक है, dy by dx at e and then उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। वाई, बिकॉज जो नॉर्मल है, नॉर्मल एंड टेंजेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एंड फॉर परपेंडिकुलर लाइंस वी नो दैट कि उनके जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। फॉर पैरेलल लाइंस द ग्रेडियंट्स आर सेम, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस द ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। Okay, so to find out the coordinates of B, we will first find out the coordinates of A. Then by using the coordinates of A, we will find out the gradient, and then we will find out the equation of normal line. Ultimately, we will put x is equals to 0 in the equation of normal line, and we will get the coordinates of B. So for A, put y is equal to 0. Why? Because you can see from the graph that point A lies on x-axis. This means that if we put y is equal to 0 in the curve, we can get the value of A. So A find out करने के लिए y is equal to 0 हम put कर देंगे ओरिजिनल कर्व में, 0 is equals to 1 minus 4 over 2x plus 1 whole square. From here 4 over 2x plus 1 whole square is equals to 1, and after simplifying you get x is equals to 1 by 2. सो पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा 1/2 कॉमा 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द ग्रेडियंट। फॉर दैट हमने डेरिवेटिव जो है वो ऑलरेडी पिछले पार्ट्स में कैलकुलेट कर लिया हुआ है, सो dy by dx को ही हम अगेन लिख लेंगे 16 into 2x plus 1 raised to the power minus 3, and now we have to just put the point in the derivative। और कौन सा पॉइंट हम पुट करेंगे, पॉइंट a पुट करेंगे, ठीक है। सो एट a which is 1/2 comma 0, x की जगह 1/2 पुट कर देंगे तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द नॉर्मल लाइन, एंड फॉर दैट वी हैव टू टेक द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द ग्रेडियंट। So mn is equal to minus 1/2. Now the equation of normal line formula is y minus y1 is equals to
mn x minus x1. So y minus 0, this is equals to minus 1 by 2 x minus 1 by 2. After simplifying, y is equals to minus 1 by 2x plus 1 by 4. Now, for the point B, we know that the point B is on the y-axis, so put x is equals to 0, or you can simply um, see that here y-intercept is 1 by 4, so you can say that the point B is 0, comma 1 by 4. Next is part 3. Find, showing all necessary working, the area of the shaded region. We know that to find the area under the curve, we use integration. So we will integrate the curve. And we have to check out the limits of y. From the diagram, we can see that the limits are 0 and 1 by 2. So y is equal to 1 minus 4 over 2x squared plus 1. We have to integrate this with respect to x. So the x is ranging from 0 to 1 by 2 because the coordinates of the a were 1 by 2 comma 0. This means here the value of x is 1 by 2 and here the value of x is 0. So we will take the limits from 0 to 1 by 2 and we will integrate. So integral of 0 to 1 by 2 y dx which is equals to, now देखिए इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे करके तो लिमिट्स जो वो साथ लिख दी हैं, x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 रेज टू द पावर माइनस 1. ये वही इंटीग्रेशन है जो हमने पार्ट 1 में कर ली थी, उसको जस्ट हमने एज इट इज लिखा है. ठीक है, पार्ट 1 में उन्होंने आपसे इंटीग्रेशन सॉल्व करवा लिया है. ठीक हो गया. लेकिन ये डिफरेंस है कि पार्ट 1 में यहाँ पे आपने c ऐड किया था, लेकिन जब आप इंटीग्रेशन विद लिमिट्स करने लगेंगे तो आप प्लस c नहीं लिखेंगे. Now we just have to put the limits, upper limit minus lower limit. So first of all put x is equals to 1 by 2 and then minus, then put x is equals to 0 and simplify. So we get integral 0 to 1 by 2 y dx which is equals to minus 1 by 2, and you can take it as positive because area is not negative. Next is the area of the triangle AOB. From the diagram you can see the triangle AOB is here. This is the triangle AOB. Now we have to find out the area of this triangle, then we will add this and this portion so that we can get the total area of the shaded region. So for this part, what we can do, area of the triangle, this is equals to 1 over 2 times base times height. And again from the diagram, you can see that the base of the triangle is 1 by 2. Why? Because the point A is 1 by 2 comma 0 and the point B is 0 comma 1 by 4. This means this length is 1 by 2 and this height is 1 by 4. So the area of the triangle will be 1 by 2 times 1 by 2 times 1 by 4. So the area of the triangle is 1 over 16. Now just add these two areas so that we can get the area of the shaded region. So 1 over 16 plus 1 over 2 which is equals to 9 by 16, and this is your final answer. Do not take minus 1 by 2 because if you are dealing with the integration and the answer comes out as negative, you will ignore the negative sign. In the next video, we will solve inshallah variant 1-3 of 2019.